किसी को पैसे बनाने एआई के थ्रू, कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हो, कहाँ पैसे बना सकता है? So all the software we are using today is going to go, उनका पूरा चेंज होने वाला है. लाइक अभी सब वेरी मैनुअल, built for humans, the interfaces. So हर तरह के apps, even messaging app, I think messaging app is a very big opportunity क्योंकि WhatsApp और Telegram अभी भी very human oriented with less AI. So something we are also adding into Bhindi Backroom. So messaging app, a billions of user base, is a very good opportunity. Productivity apps, you don't have to work. I don't know why after an AI people will work. People see it like कि सबकी job चली जाएगी, but I see it more positively. You really don't have to work. You can just have fun. Because क्या प्रोडक्टिविटी ऐप क्या बना सकते हो जिससे आपका ईमेल या मेरा ईमेल या फिर आपका कोई पर्सोना मेरे पर्सोना से सब बात कर रहा है, मुझे इन्वॉल्व भी होने की जरूरत नहीं है. The only thing we need to involve, like we are connecting right now, right? That's only thing as a human we need to do. Rest all of the things is already handled under the hood by some AI systems. Give me an example, like what? Give me use cases, 3-4 use cases दो कि प्रोडक्टिविटी ऐप कोई बना सकता है, और वो ऐप अगर आज कोई बना दे और लोगों को डाउनलोड करा दे तो that person can make a lot of money. I think one of the biggest problem right now is context. Like आप ChatGPT के पास जाते हो तो आप उनको बोलते हो, उसको हर बार एक नया कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है कि ये हुआ है. बट एज अ ह्यूमन हम किसी दूसरे इंसान को पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं देते. हम सीधा बोलते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आई एम अबाउट टू हैव अ लॉस इन सम ऑफ माई फाइनेंशियल एसेट्स एट let's say $2,000 and I talk to my brother कि प्राइस $2,000 तक पहुंच गई है. So he will not take it as like कि answer कि हाँ okay acknowledged. He will be like oh shit. He will have some kind of emotions to attach to that same stuff, right? So AI में वो बहुत बड़ी problem है context. I think context building anyone can actually add it कि the AI can understand us more better. अभी मैं ChatGPT के पास जाके बोलता हूँ उसको कि ये करना है, अगर उसकी जगह ChatGPT come back at me, that would be a very big change. अभी I think कोई नहीं कर रहा. ChatGPT ने कल ही लॉन्च किया है Pulse. Like Pulse is like सब जो भी बात कर रहे हैं ChatGPT पे वो आपको अगले दिन एक समरी बनाकर आपको बता देगा. तो आपने अगर उसको बोला है कि मेरा एक दोस्त है उसके साथ मुझे मिलने जाना है, तो अगले दिन it will suggest you some places to go. So now this is a बहुत अच्छी डायरेक्शन है क्योंकि ये ही This is what lacking in the AI. हम जाके बोलते but AI systems are not coming back at us. Now this is a very good one. Like they will talk to us and it reduces my workload more because I'm not even thinking to talk to AI now. They are coming back and actually solving my problem. Suggestive. So instead of human to AI, it's AI to human, and I am just a confirmation, yes or no. So that's one which you feel is incredible opportunity. Yeah, incredible. Productivity sort of app जो आपको अच्छे से समझे एंड आपका नेक्स्ट डे बेटर कैसे हो सकता है, आपको सोचना कम पड़े, वो खुद ही वो ऐप सजेस्ट करती जाए. That is one. Yeah, that is one opportunity right now. Very big opportunity. Okay. What's the second? Second opportunity, I mean there is multiple industry and a lot of opportunity, but I will say if you can make work invisible, like आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़े, आप emails पे जाते हो, Slack पे जाते हो या कोई भी, all these things needs to not be there. So because all these are very logical, very deterministic, AI should be able to handle it. All they need to know is my intent and they should just get the work done. So if there are 10 people I'm talking to, AI should know just this. These 2 people are very important. Just take care of them better, coordinate better, and सारा काम उनको करने दो AI systems. And उनके भी background में AI systems चलते रहेंगे. I mean internet as a whole is gonna be zombie land. Because हम ये आज पता नहीं लगा पा रहे कि हम AI से बात कर रहे हैं. So मैंने एक ट्विटर बॉट, मेरे अकाउंट में एक ट्विटर बॉट चला के डाला था. एक Obsidian founder. Obsidian is a very popular note making app. That founder was replying to the tweet done by my bot. And I read like, oh, that some guy in San Francisco who leads this project is replying to a bot. Yeah, and I was confused, like, okay, this is a very good example, like ki slowly how do I believe I should need to coordinate with an AI? Why do I convince other person on internet? So the internet will just become a consumption layer. I will just go there to acquire information,
बट नॉट टू कन्वर्स, बिकॉज आई डोंट नो कि मैं AI से बात कर रहा हूँ या ह्यूमन से बात कर रहा हूँ. सो इट्स एंड आई हैड सीन इट फर्स्ट हैंड ऑलरेडी 2 months बैक. आज तो मे बी और हो गया हो, और अगले 1 साल में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो फिर we are underestimating like how dramatically the world is changing. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.